पाखी पाखी परदेसी पाखी पाखी परदेसी पाखी पाखी परदेसी पाखी पाखी मुस्कुराहट है चेहरा नहीं है लेकिन तेरी. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this very, very special day. Hi, are you all prepared for the long weekend? May I first begin by first congratulating Brisbane Heat. What a win, and yes, Brisbane's on the top. Everyone sending in their congratulations. Very, very well done, Brisbane Heat, for that winning. Well, this weekend, there's two major events that everyone's celebrating. The Australia Day and the Republic Day of India. So what does it mean to us? Let's take a look and try and understand. As we know, there are many functions that will be taking place. We have the flag raising at the Indian Consulate at 175A Swan Road in Taringa. That happens at 9 a.m. Then we have the citizenship ceremony at Brisbane City Hall, which is always a big event. Then in the afternoon, we always have the FICQ, which has the Indian Republic Day celebration at Sunpack. And the Tamil Association of Queensland is holding a Australia Day and Indian Republic Day event at the Kupuru Secondary School in Cavendish Road. So there are some of the events taking place right here. But what are all of these? First of all, let's take a look at what does Australia Day mean to you. Australia Day is one of the biggest national celebrations observed in our country. Many people celebrate the day in different ways and for different reasons, while some don't celebrate it at all. So why is Australia Day so significant, and what does it actually commemorate? To understand Australia Day, we need to go back in history and look at what happened in the year 1770, when Captain James Cook and his crew landed at Botany Bay in Australia, after sailing from their home in Great Britain. After arriving, Captain Cook sailed the east coast of Australia and drew the first map of New South Wales to take home to Britain. This would pave the way for further British interest in the country we know today. 18 years later, in 1788, Captain Arthur Phillip and his crew, who were on board the First Fleet, sailed into Port Jackson. The fleet was made up of 11 ships, who travelled from Britain to Australia to start a new British colony. On the 26th of January, Captain Arthur Phillip raised the flag of Great Britain at Sydney Cove, marking the beginning of Australia's first British colony. That is why Australia Day occurs on this date every year, and people celebrate it because it marks the beginning of modern Australia. However, before Captain Cook or Captain Phillip set foot in Australia, a thriving Indigenous population had already occupied the land for more than 60,000 years. Despite this, the First Fleet took possession of the land and declared it property of Britain. This is why many consider celebrating Australia Day on the 26th of January distasteful. Although that day created a new home and country for many people, it also meant the invasion and mistreatment of Indigenous peoples already living in Australia. Rather than a celebration, Australia Day is seen as a day of mourning for the loss of land, language, culture and family that Indigenous Australians have suffered, and which is still felt today. Because of this, many people refer to this day as Invasion Day, Day of Mourning, or Survival Day. Over time, the reason for celebrating Australia Day
has changed. Now, Australia Day is often seen as a celebration of the many great things that make up our country: unique landscapes, cultural diversity, shared traditions, and our friendships and families. It's also seen as a day to commemorate our rich Indigenous cultures. What does Australia Day mean to you? So they were a brief history and very well articulated and very well put together in a nutshell what Australia Day means. As was said, that not everyone agrees with that day because some consider that as an invasion day, but you have to look at what's been achieved in the modern day Australia. Of course, losing anyone's customs, traditions, language, and most importantly, the precious land is not an easy thing to swallow. So that's why those sentiments are there, and it will be ongoing. Well, right now, the second thing is when we look at India and what a big celebration they had for the inauguration of Ram Mandir, which took about 550 years of legal battle to get it to where it is today, to the rightful place, to the original glory of the mandir that it originally was. And as there was some media reporting which was not aligned, not true, not well researched, so there's some complaints happening with SBS and ABC. Some of the reporters were not well versed or did not research the topic enough before reporting on the matter. So there's a big uproar and there's a campaign and there's complaints being lodged with the ombudsman for media. So right now, India is gearing up for the Republic Day celebration. Let's take a look at how the preparations are going. The Amrit Kal of our Republic. Bharat, the mother of democracy. Marching together in harmony. India-France dosti and diplomacy. Tejas and Rafale roar above Kartavya Path. A special India Today Republic Day preview. That's our top focus on India First. Hello and welcome to an India Today special broadcast on the 75th Republic Day. Preparations that are currently underway here at the Kartavya Path. The world will see India's military might, our strategic power, and also the cultural diversity of Bharat. On display on Kartavya Path will not only be Nari Shakti but also India, Bharat, the mother of democracy. Over the course of the next half hour, we get you details of Bharat Shakti on the 75th Republic Day. The President of France, Emmanuel Macron, is the chief guest at the 75th Republic Day, and on Kartavya Path, the strengthened ties between India and France will be on display. There's a French
marching contingent, a French military marching contingent. But apart from that, it's not just the French army. The French Air Force Rafales will fly past the Kartavya Path along with the mid-air refuelers. That will be a display of India and France, two countries that have carried out a number of military exercises together, not just in India, not just in France, but also in the Indo-Pacific. And that shows the relationship that's strengthening with each passing year. Prime Minister Narendra Modi, you'd recall, was the chief guest at the Bastille Day, and an Indian Army marching contingent, an Indian Armed Forces marching contingent was also a part of the Bastille Day celebrations. कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक अलग रंग देखने को मिलेगा जब फ्रांस के राष्ट्रपति की मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ फ्रांस के सबसे ज्यादा सैन्य कर्मियों का दल भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा। हमारे सबके सैनिक फ्रांस के लिए परेड का हिस्सा है। कितने सैन्य टुकड़ी आप फ्रांस से यहाँ पर आई है और क्या अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा? We are a group of 130 people, including the band members. They are from the French colony in Italy. We have our own band here. It's really a great opportunity for being here. Thank you so much for receiving us, for the hospitality, for the authorities, the Indian authorities and our French authorities for selecting us, the French colony, to have to be present over here in the most important day, the Republic Day. Thank you so much. We feel me, my troops, and my friends, we feel so happy being here in the part of this day, being a part of this day. तक किस तरह की तैयारी की आपने, किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। तैयारी भी इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस सब मिलके तैयारी कर रहे हैं। हमारा सब अच्छा ही रहा है सबके साथ। वो सेकेंड कल्चर, मिलिट्री कल्चर को भी देखने का चांस मिल रहा है। We are all of the French religion, and we say in the French religion we have a code of honor, and it says the mission is sacred. Okay, and here it's not only a mission for us; it's more. It's a pleasure and it's a great honor. So we're very excited about this. ये फ्रांस की वो सैन्य टुकड़ी सैनिक हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अश्विन हिरन के साथ मंजित दिल्ली। Bharat and the world saw the Pran Pratishtha of Maryada Purushottam Shri Ram at the Ayodhya Ram Janmabhoomi temple. And on the 75th Republic Day, the world will also see India's cultural diversity, the tableau of Uttar Pradesh, which will have Vikasit Uttar Pradesh, a display not just of the Shri Ram temple at Ayodhya, but the impact it will have on the development in Ayodhya and across Uttar Pradesh as a model civilizational cultural city. कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत, विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोगों ने अग्रभाग में भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारा जिसका जो पैनल आप देख रहे होंगे, ये राम मंदिर का ही आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन ट्रेलर पार्ट है, जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होना है, उसी के रूप में हम लोगों ने ये महाकुंभ का लोगो और जो साधु हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा डेवलपमेंट में जो कि हम नंबर 1 हिंदुस्तान में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैपिड रेल जो कि हिंदुस्तान में खाली उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो भी गाजियाबाद से दुहाई के बीच में और मेरठ तक काम चल रहा है। इसके अलावा हम आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारतवर्ष में केवल इसका प्लांट लखनऊ में सरोजिनी नगर में बन रहा है, सिंबॉलिक रूप में हमने उसको प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो साइड पैनल है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव है, हमारा जो जेवर का एयरपोर्ट है, इसके अलावा जो है नोएडा का मोबाइल हब है,
इसके अलावा जो हमारा जो LED स्क्रीन है, इसके माध्यम से हमारे सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो चल रही है। 7 एक्सप्रेसवेज हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी केवल उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर के हमारा जो है ये समृद्ध विरासत और डेवलपमेंट दोनों को हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की झलक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो रैपिड मेट्रो हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया, उसकी झलक इस बार कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने को मिलेगी। The world has acknowledged India's growing diplomatic clout. Several world leaders have talked about it. In fact, Elon Musk has also commented about it. But on Republic Day, the Platinum Republic Day of India will see a tableau of the Ministry of External Affairs that talks about India's diplomatic might that's constantly not just increasing but positively impacting the world, especially when it comes to being the voice of the global south. This was amply on display at the G20 summit, a very crucial part of the tableau of the Ministry of External Affairs. India is the voice of the developing world. And not just a voice, but India's actions are seen by the world, amply proven during the COVID crisis. When the developed world was hiding their vaccines, India, as part of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, was sharing those vaccines with the global south. On the 75th Republic Day, women empowerment and the role of women in defending our country, whether it's being a part of the armed forces as fighter pilots, helicopter pilots in the armed forces, but also in the Central Armed Police Forces and in every way of life, working shoulder to shoulder with the men, in fact at times being a couple of steps ahead in taking India forward. That power, women power, is on display on Kartavya Path this 75th Republic Day. Not symbolic, but a very significant statement of intent and action on ground. इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और इंडियन आर्मी की तरफ से जो फीमेल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगी वो हमारे साथ है। लेफ्टिनेंट प्रियंका हमारे साथ है। इस बार आर्टिलरी की तरफ से भी जो है महिला ऑफिसर्स आरडी परेड में आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट बैच है वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्टिलरी जो कि कर्तव्य पथ पे पार्ट ले रही हैं। मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। जो जर्नी रही है एक एनसीसी कैडेट से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर तक की, ये काफी सरियल फीलिंग है। एज ए एनसीसी कैडेट आप ऑफिसर्स को देखते हो, आप इक्विपमेंट को देखते हो और अब ये पल है कि मैं उस इक्विपमेंट को लीड कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझती हूँ और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिनाका मिसाइल जो है एक बहुत पूर्ण हथियार है भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, और उसकी जिम्मेदारी अब महिलाओं के कंधे पे है। जी बिल्कुल, जहाँ की पिनाका सिस्टम की बात है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और मेरा मानना ये है कि अगर हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप मेल ऑफिसर हो या फीमेल ऑफिसर हो। जैसे कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स उसको हैंडल करते हैं, हम भी वैसे ही हैंडल करेंगे। एक समय में सपना होता था लड़कियों का इंडियन आर्मी में जाना, फिर धीरे धीरे वो सफल होता गया। ऐसे मुकाम भी महिलाओं ने हासिल किए हैं इंडियन आर्मी में जो काफी सराहनीय है। इस बार आप एक फीमेल ऑफिसर के तौर पे इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ पे, कैसा लग रहा है? कितनी मुश्किल होती है ये पूरी परेड की जो ट्रेनिंग होती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बार कर्तव्य पथ पे हूँ और मैं रेजिमेंट ऑफ आरटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। एंड मुश्किलात, हाँ, मतलब बहुत टाइम से वो इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे ट्रूप्स बहुत मेहनत करते हैं उस पर। पिछले 2 महीने से हम यहाँ पे हैं, वो इक्विपमेंट को तैयार कर रहे हैं कि वो इक्विपमेंट आरडी परेड के लिए फाइनली रेडी हो। और ठंड का सामना बहुत करना पड़ता है और भी काफी चैलेंजेस हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट
सब बहुत अपना पुट इन मारते हैं एंड दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। इस बार की रिपब्लिक परेड महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे ज्यादा यह दुनिया को दिखाता है कि कितना प्रोग्रेसिव इंडिया एज ए नेशन है, जो कि हमेशा सोचा गया पिछड़ा हुआ है या पीछे की सोच है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं इस देश में। Well, it is immense pride for me to be here. It's a great privilege to represent my regiment and my community. फीमेल ऑफिसर्स के लिए कितनी गर्व की बात है कि इस बार वो जो है वो लीड कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ में। बहुत बड़ी बात है एंड यहाँ जितने भी कंटिंजेंट कमांडर्स हैं, सबने बहुत मेहनत करी है अपनी अपनी फील्ड में और इसीलिए वो यहाँ आए हैं। तो उनकी मेहनत को तो सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी था। इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार कर्तव्य पथ पे भारतीय त्रिसेना यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला टुकड़ी भाग लेगी, मार्च करेगी और इस टुकड़ी को जो लीड कर रही हैं कैप्टन संध्या हमारे साथ है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेना की जो महिला टुकड़ी है वो आगे बढ़ेगी। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है गणतंत्र दिवस? तैयारी हमारी पूरी है और ये जो फीलिंग है कि तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आई हैं एज वन कंटिजेंट और हमने जिस हिसाब से ट्रेनिंग की है तो और जिस लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं एज अ कंटिजेंट, तो मैं बोलना चाहूंगी कि हम गणतंत्र दिवस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम एक बहुत ही अच्छा मार्चिंग करेंगे कर्तव्य पथ पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेना की जो महिला टुकड़ी है वो इस बार मार्च करेगी, राष्ट्रपति को सलामी देगी। ऐतिहासिक फैसला भी इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा है कि गणतंत्र दिवस, किसी भी गणतंत्र दिवस में तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स, ऑल वुमेन कंटिजेंट है ये, तो तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आके प्रेसिडेंट को हम सलामी देंगे। और स्टार्टिंग में ये था कि तीनों सेना में जो ड्रिल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि तीनों सेना का सल्यूट अलग तरीके से है और बाकी ड्रिल्स में भी थोड़ा फर्क है। तो उन चीजों को एक जैसा करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना, उसके लिए जो हमारे ट्रूप्स ने जो मेहनत की है और हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जो कि काफी काबिल हैं, उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंडर तीनों सेना एक साथ आई और एक लेवल, एक जैसी अभी मार्चिंग कर रहे हैं। तो नजारा देखने लायक होगा बिल्कुल, जैसे कि आपने हर बार। So there you are, ladies and gentlemen, up to date on Australian Indian Radio and the Air Mix show. So we had a look at in detail the preparations for the 75th Indian Republic Day, which will be happening at Kartavya Bhavan Marg in Delhi, and the French Prince is the chief guest this year. We will be bringing to you some reports next week on other things here, but as this is a long weekend, this will be the last show for this weekend, and I think the next show will be on Tuesday, because on Monday there is a funeral within our community which has to be attended. So wishing you all the very best for Australia Day. Whatever you do, whichever way you celebrate, or even if you don't celebrate, that's respected as well. Everyone has a right to their own opinions. And of course, if you're celebrating the Indian Republic Day, do that. And also, it is the anniversary of the Hindu Society of Queensland. If you're going there, partake in the celebrations. Congratulations to HSQ, the Hindu Society of Queensland, which operates Gayatri Mandir at Boondall. So, lots of celebrations, lots happening this weekend. But before you head out and everything like that, always, just glance at the weather and look at the reports from the Bureau of Meteorology, because there are update weather patterns. There's things that are happening more so up north rather than down here in Brisbane. But it's always good to keep a lookout. Some events may get cancelled if the weather is very adverse. But for now, it's been wonderful having your company today. And right now, let's take a look at some of the functions and events taking place in Brisbane.
दिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे दिल भर तेरे खातिर मैं चांद तोड़ कर लाया हूँ लेने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ दिल भर तेरे खातिर मैं चांद तोड़ कर लाया हूँ लेने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे Well, ladies and gentlemen, that's about all we have time for you in this segment. And we were listening to a very, very, very old recording of the Brisbane Barbers Band. There is the backing music that was at the Hendra State School. Would it be about 25 years back when that did happen? Well, right now, it's time to say goodbye. Have a wonderful long weekend. Enjoy the celebrations of Australia Day. And if you're going to citizenship ceremonies or you're going to cultural items depicting the Indian Republic Day, stay safe, enjoy the time with your family. Until Tuesday, it's goodbye from us.